So, very good evening, friends. This is your own friend Bharat from Niveshak Bharat Talks YouTube channel. So, hope you all had a wonderful weekend. So, कल से market start होगी, so we have to be ready with our homework. So, this is for what I am here to share whatever chart observations for the upcoming week I have on all the you know major benchmark indices and sectors. तो हम लोग जैसे अपना फॉर्मेट लास्ट 2 वीक से कर रहे हैं, तो वी विल स्टार्ट विद द सेक्टोरल एनालिसिस और हर सेक्टर में क्या हुआ और क्या लास्ट वीक और क्या लग रहा है अगले वीक के लिए वी विल डिस्कस हियर एंड आफ्टर दैट वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर सर्टेन स्टॉक्स व्हिच ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस जिन्होंने अच्छा मूवमेंट दिखाया है और अच्छा एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में उसके लिए. So with all the disclaimers that यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे that will be basically as a routine exercise of sharing how to मतलब जो लेवल्स हम लोग निकालते हैं या जिन लेवल्स के ऊपर हम फोकस करते हैं वो कैसे निकालते हैं and all that stuff basically with an intent for educational purpose. So इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ पे खरीदिए यहाँ पे बेचिए. We are not at all any tip providers and all. So let's get started without wasting time further. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी कि हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था लास्ट वीक के एनालिसिस में और उसके बाद क्या हुआ. सो लास्ट वीक अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज वेयर वी लेफ्ट 7th of January. वहां पे जो था उस वीक का जो हाई था 17,925 विच इज मार्क्ड हियर अप्रोक्सीमेटली. तो हम लोगों ने यही प्लान किया था कि वी विल सी और वी हैव टू सी कि नेक्स्ट वीक दैट इज जो लास्ट वीक था उसमें ये हाई अगर ब्रेक होता है तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी 18,200. So this is what it happened as per the charts if you are able to see. तो मंडे को ही ओपन पे ही स्टार्ट ऑफ द वीक मंडे को ही इसने वो लेवल ब्रीच करा और अच्छे से ब्रेक किया विद गुड कैंडल. सो उसके बाद में इट हैज नेवर कम बैक थ्रू आउट द वीक एंड इफ यू सी देयर वाज अ ह्यूज गैप अप between 18,064 on and Wednesday it was a huge gap up. सो दैट इज और जो हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस भी किया था तो 18,200 वी टच्ड but 18,300 पे we faced an immense resistance because of a lot of call writing on 18,300 to 18,500 strikes. So this is what happened the last week. So अब हम लोग देखते हैं कि इस वीक के लिए क्या प्रोबेबिलिटीज है और क्या लेवल्स पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए. So we'll go to a shorter time frame और उसमें जाकर हम देखेंगे कि कौन से की लेवल्स है जो हमें अपकमिंग वीक के लिए ध्यान रखने चाहिए. सो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे दैट व्यू इज गेटिंग वैलिडेटेड ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम वेरी क्लियरली एंड प्रिसाइजली कि ये जो हाई था पिछले वीक का यहाँ से हम कभी भी पूरे वीक में मतलब इसको टच ही नहीं किया है. जस्ट ऑन द वेरी मंडे अर्ली मॉर्निंग वी टच्ड इट एंड आफ्टर दैट देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट अप रन. So, अब जो लेवल्स हमें नेक्स्ट वीक के लिए देखना है सो वी आर हैविंग अ की रेजिस्टेंस एट 18,300. तो अगर 18,300 के कॉल राइटर्स become weak in the coming days in the coming week, तो किसी भी दिन अगर हमें 1803 पे कॉल राइटर्स वीक लगते हैं तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट वी विल we might be seeing 18,600 being tested which was a previous all time high. बट इफ एट ऑल देर आर अदर पॉसिबिलिटी इज कि या तो यहीं पे इसी जोन में कुछ कंसोलिडेट करेगा बिफोर गिविंग अ फाइनल ब्रेकआउट टुवर्ड्स द अपसाइड. दैट इज वन पॉसिबिलिटी विच कैन हैपन. सेकेंड पॉसिबिलिटी है जो इस वीक का लो है. सो इफ एट ऑल आई मार्क इट हियर सो दिस इज द लो ऑफ दिस वीक और ये गैप अप का ये जो है ये बीच में एक गैप जोन है. तो हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक पुल बैक लेके इस गैप को फिल करने आए and from there it might resume its uptrend. So overall broader uptrend is intact. Small intermittent pullbacks as I have been reiterating in all my videos also कि यहाँ पे जो है हम लोग ये नहीं एकदम से फील कर सकते कि आज जो है हम 18,200 पे एंड all of a sudden we will reach 17,600 800 and all that stuff. That eventuality may happen, but ग्लोबल मार्केट्स में कुछ न्यूज आता है या कुछ टर्मोइल की
खबरें आती हैं, तो उस केस में अगर ग्लोबल पीयर्स भी ऐसा परफॉर्म करते तो अवर मार्केट्स माइट नॉट बी आइसोलेटेड ड्यू टू द ग्लोबल कनेक्टिविटी. But overall, in normal timings, it's not possible that you will see such kind of drastic fall in a single leg. So there might be a multiple legs, but immediately जो short term view अगर हम देख रहे हैं तो ये gap fill होने की possibility हो सकती है, या consolidation इसके आसपास में हो सकता है 18,300 resistance के आसपास before the call writers surrender, and then we will see a up move towards 18,600 and new highs. So this is a view for निफ्टी. उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ लास्ट वीक, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन छोड़ के गए थे. सो इफ वी सी हियर, देन 18,500 वाज द सॉरी हियर वी आर एट बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी का भी अगर हम देखेंगे तो जो लास्ट वीक का हाई था दैट वाज 37,863. तो वो हम लोगों ने कन्विंसिंगली मंडे को ही, दैट इज 10th ऑफ जनवरी, जो लास्ट वीक मंडे था, उसी मंडे को हम लोगों ने अच्छे विद क्लियर गुड स्ट्रेंथ हम लोगों ने इसको ब्रेक किया. सो बट उसके बाद में बैंक निफ्टी वाज नॉट एबल टू सस्टेन ऑन अ हायर लेवल्स. सो 38,000 वाज अ की रेजिस्टेंस व्हिच वी एंटिसिपेटेड लास्ट वीक. वो क्लोज हुए हैं हम उसके ऊपर भी डेली बेसिस पे, बट हायर लेवल्स पे 38,800 के आसपास या 37,800 टू 800 रेंज में हम लोगों को एक स्टिफ रेजिस्टेंस देखने को मिली. सो लेट्स गो टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम टू सी ऑल दैट हैपेंड लास्ट वीक क्लियरली, और लेवल्स इस वीक के लिए हमें क्या देखने चाहिए. सो इफ वी गो हियर, सो यहाँ से हम लोग मंडे को स्टार्ट किए. सो दिस इज वेयर वी स्टार्टेड ऑफ ऑन मंडे. सो मंडे को हम लोगों ने यहाँ का प्रीवियस हाई को टेस्ट किया, प्रीवियस वीक हाई को टेस्ट किया, एंड देन फाइनली वी वेंट अहेड एंड वी नेवर टेस्टेड इट बैक. सो फाइनली उसके बाद में जब हम लोग हायर लेवल्स पे पहुंचे 38,500 के आसपास, द बैंक निफ्टी कंसोलिडेटेड फॉर अ वाइल, and before that after that consolidation it broke this trend line which it was serving or respecting earlier. So जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो देयर वाज फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अ वीकनिंग ऑफ बैंक निफ्टी इन कंपैरिजन टू निफ्टी. तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज इट बिकेम वीक, एंड उसके बाद इट टेस्टेड इट्स अर्लियर सपोर्ट, इट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, एंड उसके बाद यहाँ से भी ब्रेक दिया. ब्रेक डाउन देने के बाद अभी जो रिसेंटली इसने जो लास्ट वीक का क्लोज, जो फ्राइडे का क्लोज दिया है, इट हैज कंसोलिडेटेड अराउंड दैट. सो जो ये सपोर्ट है, either it might act as a resistance if at all there is a further fall to happen. Due to the law of polarity, this support can again act as a resistance, right? So otherwise, and the second possibility is, as we have seen the buying emerging from these lower levels, that is 38,000. So 38,000 से buying आया है, तो till the time 37,863, which is the previous week high, इसको हम अगर ब्रीच नहीं करते ऑन द लोअर एंड, there is a high possibility that the uptrend in bank nifty might continue. There might be certain intermittent pullbacks, but till the time we are not breaching the previous week high on the lower end, it is a possibility or a high probability that bank nifty will continue its uptrend. So these levels have to be taken care of, and after that we will have a clear cut direction. तो उसके बाद में हम लोग चलते हैं CNX ऑटो, दैट इज ऑटो सेक्टर विच हैज गिवन इन डिसेंट अपसाइड प्रीवियस वीक में. सो लेट्स सी कि हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ी थी अपनी लास्ट वीक की डिस्कशन. एंड सो लास्ट वीक हमारे लिए जो CNX ऑटो जो था वो 11,300 was emerging as a resistance or supply zone last week in our last discussion. But on Monday only, when we saw this, it was broken with a decent strength of the bulls demonstrated by the bulls. So ये कैंडल जो हम देख रहे हैं 10th की, ये बहुत ही बड़ी कैंडल बनी और रेजिस्टेंस जोन से ऊपर बनी. So which was in a clear indication that auto sector is showing
or demonstrating a relative strength in comparison to benchmark index, both the indices. So उसके बाद it has never come back to test this even earlier considered resistance, which might be acting as a support now. So it is again showing the relative strength. So अब चलते हैं हम लोग next week के लिए levels देखने के लिए on a lower time frame. So if we see here, अगर हम लोग एक trend line बनाते हैं, so this trend line is continuously getting respected और अभी हम बिल्कुल close जो हुआ है, that is exactly near about at the trend line. So till the time this trend line is getting respected, and if we breach this previous week, high, the week which we ended right now, this is your high. So अगर इस हाई को ब्रीच करते हैं हम नेक्स्ट वीक में और इसके ऊपर जाते हैं, तो there is a high possibility of continuation of the uptrend in CNX auto. But at the same time, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, so we need to see what is the immediate resistance level which or supply zone. So हम लोग जो हैं यहाँ पे अभी की सपोर्ट की जोन पे ही खड़े हैं, that is 11,722 टू बी प्रिसाइज, जो कि लग रहा है कि पीछे काफी टाइम से रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ, बड़ी स्ट्रेंथ वाली कैंडल के साथ हम लोगों ने फॉल दिया था. सो अब हम वहां पे पहुंच गए हैं कि वेयर इट हैज टू दिस लेवल्स विल बी डिसाइसिव वन, कि यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें कैसा देखने को मिलता है. सो अगर हम 11,722 को क्लोज, वी कैन बी गिविंग अ क्लोज अबव 11,722 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस. सो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इस ट्रेंड को रिज्यूम करेंगे और we might see the upper end of the trend line in the coming days. That is a new all-time high or approximately 12,140 on CNX auto. So metals में भी थोड़ा बहुत movement देखने को मिला है. It has given a breakout above the descending channel, जहाँ पे हम लोगों ने discussion छोड़ी थी specific to metals. So 10th को हमारे यहाँ पे this was the last point where we had a discussion last week. यहाँ पर डोजी का क्लोज हुआ था इसके अपर ट्रेंड लाइन के क्लोज अबव. उसके बाद नेक्स्ट डे इसने माइनर सा अप मूव दिया. ऑन ट्यूसडे इट हैड अ ग्रेजुअल फॉल, बट इट डिड नॉट वेंट बिलो दिस बुलिश कैंडल. वहीं से फिर से रिवर्सल हुआ, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एंड ऑन थर्सडे इट गेव अ डिसेंट स्ट्रेंथ कैंडल क्लोज. So उसके बाद में on Friday we have just had a very small kind of a up move, and we retained the close over there. अभी जो key point है, this is a multi-day, multi-week kind of a resistance zone that is at 5,906. If you are seeing here, we are seeing the this has acted as a resistance zone. This has acted here, acted here, acted here. And now we are exactly similarly placed at the same zone. So यहाँ पे अब हमें देखना है कि क्या प्राइस एक्शन हमें दिखाता है मूवमेंट ऑन अ कमिंग वीक. लेट्स गो टू द, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल्स के लिए जाते हैं. तो अगर टिल द टाइम वी आर नॉट ब्रीचिंग दिस लो ऑफ से 5800, सो 5800 अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम ब्रीच नहीं करते हैं, तो वी कैन एंटिसिपेट अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन on a upper side, and maybe we are going to see the upper channel of the rising trend. So इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सॉरी, तो यहाँ से हम लोग जो है एक 6200 तक का मूव आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं. अगर हम 5800 को अगर लोअर साइड पे ब्रीच करते हैं, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी टू टेस्ट दिस ट्रेंड लाइन, दैट इज 56 अराउंड 56. सो मेटल्स जो है एटलीस्ट showing some sort of strength. All where that is to be waited is how the price behaves around 5900 and 5910. रियलिटी में कुछ ज्यादा चेंजेस तो नहीं हुआ है, बट वी आर इन अ वेरी
टाइट नैरो रेंज ऑफ कंसोलिडेशन। तो यहाँ के लिए भी हमें ओवरऑल जो है एक मल्टी डे और वीक रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगी, दैट इज अराउंड 520 टू 525। टिल नाउ वी आर एट 510 ऑन अ इंडेक्स लेवल। सो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं देखने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें भी हम यही कहेंगे कि वी आर एट नियर बाय टू दिस जोन एंड this zone needs to be respected. So till the time we are, neither breaching 500 on the lower end or we are not breaching, 525 on a upper end. So we might consolidate more within this zone before the direction of movement gets clarified next week. तो 500 से नीचे के बेसिस पे थोड़ा सा हम लोग को लॉन्ग्स के लिए कोशिश करना होगा कि वी शुड अवॉइड इफ एट ऑल 500 इज broken. And at the same time, if 525 it gets broken convincingly on a daily closing basis, so we can anticipate a decent up in the coming days. So CNX Finance is directly having a correlation with Bank Nifty. तो यहाँ पे वही हुआ जब हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था 7th ऑफ जनवरी के वीकेंड कनेक्ट के लिए। सो मार्केट एनालिसिस उस टाइम पे जो हम लोगों ने किया था इस कमिंग वीक के लिए वो ये था कि दिस लेवल ऑफ 18,400 कुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी फाइनेंस। बट हुआ क्या कि ऑन मंडे इटसेल्फ इट गिव अ क्लोज अबव दिस रेजिस्टेंस। After that, it saw a gap up on Wednesday like a Bank Nifty, which we discussed just now. और उसके बाद यहाँ पे इसने भी topping out देखा. The way which Bank Nifty topped out on the higher levels, similar was the thing which happened on Nifty Finance also, and it saw it at topping at the higher levels. But the best part for the bulls is if I maximize this, see even though this after the bearish candle. यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस थी इट नाउ हैज एक्टेड एज अ सपोर्ट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। सो इफ यू सी हियर द इट इज अ हैमर कैंडल ऑन फ्राइडे क्लोजिंग, सो व्हिच इंडिकेट्स दैट फ्रॉम दिस लेवल बाइंग हैज इमर्ज्ड। सो अब क्या हुआ है कि लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से द अर्लियर रेजिस्टेंस नाउ इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, फॉर निफ्टी फाइनेंस। तो कौन से लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए, फॉर दैट वी विल गो टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम और उसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज जस्ट अ सेक। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो द इमीडिएट सप्लाई जोन व्हिच इज विजिबल इज अराउंड 19,220 from 19,000 to 19,200 it can be a major supply zone। और छोटे टाइम फ्रेम के लिए हम इमीडिएटली देखते हैं कि which are the levels to be monitored। So immediate short term में if at all we are able to hold 18,400, ideally we should be। So then we have next levels as around 19,000 to 19,200, the same levels which we discussed right now। तो नेक्स्ट जो है हम लोग आईटी सेक्टर पे चलते हैं। तो आईटी सेक्टर ने जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस करे थे, वी वर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक आफ्टर अ डिसेंट रन अप। वो पुल बैक हमने देखने को मिला भी सही एंड उसके बाद में इट हैज अगेन कंटिन्यूड इट्स जर्नी अप अपवर्ड्स। सो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्पेसिफिक टू निफ्टी आईटी, दैट वाज अराउंड 7th ऑफ जैन। यहाँ पे हम लोगों को एक ड्रैगन फ्लाई सॉरी ग्रेवस्टोन डोजी काइंड ऑफ कैंडल दिख रही है ये। और उसके बाद में इट वेंट अप ऑन मंडे, बट जो है उसका क्लोज अराउंड अबाउट दैट टाइम। उसके बाद में फाइनली वी हैव मेंटेन्ड द सैंक्टिटी ऑफ दिस लेवल। और यहाँ से हम लोग बार बार जो है बाइंग इमर्ज होती हुई देख रहे हैं कंटिन्यूअसली एट दिस लेवल 4 or 5 times continuously some sort of buying has been witnessed around 38,000 levels। so abhi ke liye as per this price action 38,000 should act as a strong support for nifty it। on the upper end
we are seeing a strong and stiff resistance for 3 days on 39,000 levels. So 38,000 से 39,000 की एक range लग रही है 1,000 points की, where it is consolidating. Any break on either side will clarify the direction for the Nifty IT. So key levels will be like more or less the same broader range, 38,000 to 39,000. So till the point we are holding this level of 38,600. So the likely possibility of uptrend continuation is much more. और अगर हम 38,600 को breach करते हैं, so then 38,400 and 38,100 cannot be ruled out. FMCG में कुछ भी नहीं हुआ. FMCG is consolidating. FMCG is at the same levels mostly where we discuss. So बहुत ही tight narrow range में it has been consolidating. So ये range को either of the side we have to see a kind of a breakout or a breakdown. So till the time that doesn't happen, this is a sector which has got no significance for any kind of trade plan or trade execution, barring certain aberrations. फार्मा में भी वही सेम चीज है. लास्ट वीक जब हम लोग डिस्कस किए थे 7th को, so it has given a very much narrow consolidation after that. ना तो ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है, ना ही डाउन का मूव देखने को मिल रहा है. तो मोर और लेस इट इज इन अ साइडवेज और अ कंसोलिडेशन फेज. स्मॉल कैप जो हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, इट वाज वेरी हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एंड इस इंडेक्स पे हम लोग एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे. अगर आप लोग लास्ट वीक का वीडियो देखेंगे जहां पे हम लोग एनालिसिस किए थे, so we were expecting a breakout which eventually happened this week. और उस ब्रेकआउट होने के बाद में the close is above that prior all time high of 11,870. So here also this is one of the index which has made a all time high and demonstrating a relative strength across its peers. So levels के लिए अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो we will have this trend line here which is continuously being getting respected. और यहाँ पे ये जो breakout zone हुआ है, this resistance might act as a short term support also as per the law of polarity. तो ये confluence भी हो रहा है, ये trend line भी है, और ये तो 11,870 ideally should be held in the coming week if at all this uptrend has to continue, or there might be a possibility of a slight pullback. So based on how the price acts around these levels, we can plan and execute. मिड कैप का भी वही है, पर मिड कैप में अभी ब्रेकआउट होना बाकी है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप इंडेक्स. सो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे, so it's like we have already given a breakout of the falling channel, और ये ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी लास्ट वीक. और उसके बाद में हम नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द काइंड ऑफ प्रीवियस ऑल टाइम हाई which needs to be seen how the price behaves around 33,250 which was a previous all time high. So अभी के लिए immediately जो है कि ये लेवल दिख रहा है जो immediate supply zone हो सकता है एक mid cap index के लिए, where we are approaching very soon. Around 38,200 to 32,300. ये zone के पास we have to be seeing and watching closely the price action. So this is all regarding the sectoral indices chart observations, and hope it adds value to your trade plan and investment plan and execution. So उसके बाद में जैसा हम लोग डिस्कस करते हैं पिछले 2-3 वीक से जो हम लोग स्टार्ट किए हैं ये एनालिसिस करना, कुछ एक सेक्टर्स और कुछ एक स्टॉक्स उनमें से जो कि एक अच्छा डिसेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ में प्राइस एक्शन के बेसिस पे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. So let's get started with some of those stocks. So पहला जो stock है that is TCS. Even though Nifty IT gave some sort of pullback and all that, but TCS ने अपने results के बाद भी उस trend को relatively TCS and Infosys both have continued.
बट टीसीएस में जो है प्राइस सेक्शन और जो चार्ट स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी मच एविडेंट हियर. It is showing a kind of high probability breakout from the consolidation zone. और उसके साथ साथ इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनाया है. देयर इज अ likelihood of getting this prior supply zone of around 4000 getting breached on a higher side in the coming week. This is what I, as per the chart readings, expect. So how the price action behaves around this 4000 has to be clearly witnessed by us. ऐसा नहीं है कि मैंने बोला या मुझे दिख रहा है तो इट्स नो वे. आई एम कन्वेइंग हियर व्हाट द चार्ट्स आर टेलिंग टू मी. तो ये 4000 के लेवल के आसपास अगर हम क्लोज ऊपर देते हैं 4000 के ऊपर ऑन अ डेली क्लोज बेसिस, which is in itself definitely can take it to 4200 to 4300 levels in a very short term. So next चलते हैं हम लोग SBI Life पे. TCS का once more on a higher time frame also, if you can see here, we are about to break this resistance on a higher time frame as well. So आपको अच्छा दिख रहा है कि rounding bottom pattern is on higher and lower time frame both. So SBI Life में भी सेम चीज है. SBI Life में डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट ऑलरेडी लास्ट वीक में हो चुका है. इफ आई गो बाय द वीकली चार्ट, और अगर डेली चार्ट पे हम लोग इसको कन्वर्ट करते तो वी आर वेरी मच नियर बाय टू द प्रीवियस ऑल टाइम हाई which earlier acted as a resistance. So now there is a high possibility that we will either directly break this in the coming week, or we can consolidate in this zone before we eventually give out a breakout. This is a second setup, high probability setup. Third is India Cements. So India Cements is, the strongest of the lot, which has given a 52-week high this week. So ये एक सीमेंट सेक्टर में से पहला स्टॉक है जिसने 52 वीक हाई दिया है current, where all the other relative peers are kind of subdued or sideways. And secondly, the best part of it is कि ये जो है ये around 15 years का multi-year breakout भी देता हुआ दिख रहा है on a higher time frame. Monthly chart पे अगर I will take you through is, so it was having this zone as the resistance in around 2006. So this zone को it tried here in June 2017. वहां से फिर से we saw a fall, and it consolidated from the past 2 weeks, 2 months, sorry, in this zone where it again had a stiff resistance. So अब जो ongoing month है उसमें जो कैंडल देखने को मिला, और even on a weekly chart if I see here, the lot of volumes are there this week as well as the previous week. So there is a high possibility of this resistance zone getting breached, and after 52-week high we can test or we can see all-time high, the previous all-time high, as an immediate probable milestone around 33-32 on this counter. So उसके बाद में अगर हम next in the my radar और watch list is Praj. तो प्राज इंडस्ट्रीज में अगर हम लोग देखेंगे तो एक फ्लैग पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट होता हुआ भी दिख रहा है आफ्टर डिसेंट कंसोलिडेशन, और इसमें जो है इसने एक चैनल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है इस वीक में, and it has now on the verge of touching its or kissing its previous all-time high of around 407. So this is looking very strong on the charts price action wise. So अगर हम अगला स्टॉक देखेंगे तो दैट इज बिरला कॉर्प. सो बिरला कॉर्प में भी वही मेरा फेवरेट पैटर्न बन रहा है. बेसिकली आई रिक्वायर लॉट ऑफ कंसोलिडेशन अराउंड द लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन. अगर वहां पे हो रहा है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट द इवेंचुअली एंटिसिपेटेड ब्रेकआउट हैज गॉट अ हायर पॉसिबिलिटी. सो यहाँ पे वही चीज को लेकर आई हैव शॉर्ट लिस्टेड दिस हियर टू डिस्कस. So there is a high possibility कि हम लोग यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट देखेंगे, और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अ मल्टी मंथ ब्रेकआउट. So these kind of breakouts I love to play, and I definitely have faced or experienced success ratio in these kind of breakouts is much more, which are there on the higher time. And last in my watch list or radar is Century Enka. So similar pattern which I discussed. So,
has been consolidating around the resistance, and then finally the Friday candle gave a good close with volumes, and weekly close confirms that okay, the strength is and momentum are intact on the counter. So the earlier all-time high of 516 is what I am expected. I am expecting this to getting breached on a higher end in the coming few days, and it can also continue its overall uptrend. This is all for the next week analysis from my end today. तो आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल होगा. For any queries, you can reach out to my Twitter handle, and so let me share the Twitter handle as well. So this is my Twitter handle where you can reach out to me for any kind of help if at all I can be of. और इससे जाते जाते we will see what was the performance of our लास्ट वीक्स एपिसोड 3 जो हम लोगों ने वीक अहेड एनालिसिस क्या किया था उसमें जो स्टॉक शेयर किए थे. So this is I have posted on the Twitter also. This is how these have performed in the last. So this is nowhere a kind of thing to boast about, but this is how, if at all, as we are discussing about educational purpose, this is how these stocks were shortlisted on a higher relative strength basis. And ऐसा नहीं है कि हमने शॉर्टलिस्ट किया तो वो उसी दिन से चलना शुरू हो जाएंगे. So some have given a very decent returns in a short span of time. The others are not like kind of laggards. They are there to take their own course of time to perform. But these were discussed as a high relative strength stocks. So similarly, we have discussed it for the upcoming week. Moves cannot be anticipated, or the quantum of move cannot be anticipated upfront. वो हमें मार्केट में टाइम के साथ पता चलेगा. बट अगर हम लोगों ने रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, हाई मोमेंटम स्टॉक्स हैं या टेक्नो फंडा स्टॉक्स है, तो देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ यू लूजिंग अ मनी इवेंचुअली. दैट इज व्हाट can be rest assured. If your stock selection, if your research, if your weekend homework is pretty well, you definitely can be staying assured that you will not lose money eventually in a longer run. So thanks all for watching this video, and in any clarification you can reach out to me on my Twitter handle. You can subscribe to our YouTube channel as well, and you can subscribe to our Telegram channel as well. So wishing you all a safe time ahead. Have a wonderful day and rest of the weekend. Stay safe, stay inside, stay safe. Thanks a lot for watching.